to start a new section of infection disease. So first chapter in infectious disease is sepsis. It is a heterogeneous syndrome characterized by widespread inflammation and organ dysfunction. So sepsis is dysregulated inflammation, probably due to an infection causing organ damage. It's kind of like a civil war where our immunity, our WBCs are killing our cells in an attempt to kill the foreign bacteria. Sepsis has a mortality rate of 15 to 20%, and if the patient has septic shock, the mortality is 50%. Sepsis is the single most expensive IPD condition, and gram-negative bacteria are predominantly pathogens of sepsis. Gram-positive bacteria, according to Tintinelli, blue bacterias, gram-positive bacterias are the predominant pathogen of sepsis, including MRSA, VRSA, vancomycin resistant enterococcus, MDR organism, fungal spores. And sepsis is the reason why I dropped the idea of critical care. And I have just got to know about that Indian doctors live about 12 years less compared to the general public, while in the United States, doctors live longer than the general public. What are we doing different than US? There is an artificial oversupply of doctors in India. Artificial oversupply or real oversupply. Just we don't have enough research on this, but definitely it will get clear with time. Previously, sepsis is presence of a systemic dysfunctional host response, यानी systemic dysfunctional host response that leads to organ failure. So the inflammation is disproportionate and it is damaging your own cells. Previously, sepsis was a suspected or confirmed infection with evidence of systemic inflammation like SIRS score. And severe sepsis was sepsis plus evidence of new organ damage, thought to be secondary to tissue hypoperfusion. Septic shock is severe sepsis plus shock, and it has very bad prognosis. Patients with severe sepsis and septic shock require the following clinical actions between initial recognition and 3 hours. Patient with severe sepsis and septic shock require the following clinical actions between initial recognition and 3 hours, which are lactate measurement, blood and other cultures before antibiotics. Next, antibiotic therapy directed at specific source or broad. Depending upon the information that you have, it's better to start broad. Initial fluid therapy with 30 ml per kg of crystalloids, and if the initial lactate is elevated more than 2, repeat lactate before 6 hours. So lactate, cultures, antibiotics, fluid 30 ml per kg,
and repeat the lactate if initial lactates were more than 2. Patients with septic shock require the following additional actions like repeat 20 ml per kg bolus, initiating vasopressors, reassessment and documentation of clinical and hemodynamic oxygen measurements to judge adequacy of volume status and tissue perfusion interventions. So oxygen documentation, reassessing and documenting clinical and hemodynamic oxygen measurement to judge adequacy of volume status and tissue perfusion. फ्लूइड स्टेटस चेक करना है पेशेंट का और एंड ऑर्गन परफ्यूजन चेक करना है लाइक मॉटलिंग, कैपिलरी रिफिल टाइम एक्सेट्रा. Then there is Q-SOFA score which includes your GCS, respiratory rate, and BP. GCS less than 15, respiratory rate more than 22, and SBP less than equal 100 with a score of 2 or more indicating a poor outcome. The systemic inflammatory response syndrome response is not a diagnosis or a good indicator of outcome. It is just to stratify patient with systemic inflammation. And in the below diagram you can see that SIRS, sepsis and other. So basically inflammation is not necessarily due to infection. Some infections show inflammation, some may not show inflammation, and sometimes inflammation is due to infection, sometimes it's not due to infections. So inflammation can be caused by trauma, burns, pancreatitis. That's why there is diffuse inflammation and organ failure and inflammatory lung injury like ARDS in pancreatitis despite the patient not having infections. Plus, we see a raised ESR and procal in pancreatitis patient, which will make us think that the patient has infection, and we will start high antibiotics for the patient, but that is not the right thing to do. Similarly, bacteremia, mostly bacteria are the causes of infection, then fungus, parasite, viruses and other. Serum lactate level are important because doesn't matter the cause of the lactate rise. The lactate rise or lactate clearance is a clear-cut marker of mortality and survival. If your lactate rises from 2 to 4, your mortality risk increases 15% even without hypotension, and the rate continues to rise with increasing lactate levels. So lactate clearance, lactate is a non-specific and it can be elevated in a number of conditions that must be studied together for a clinical judgment. Here is a diagram of pathogenesis on sepsis. So there is infection ka source, their location, virulence and load matters. Then host factor, its genetics, immunocompetence and comorbidities. Based upon the interplay, there is inflammation. Inflammation does havoc, mitochondrial dysfunction, reactive oxygen damage causing cardiomyopathy, nitric oxide release causing vasodilation, increased vascular permeability. So सारा पानी निकल जाएगा. इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन कॉजिंग हाइपोटेंशन एंड शॉक होगा तो टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन होगा तो सेल डेथ होगी. सेल डेथ मतलब ऑर्गन फेलियर, एंड सेल डेथ होगी तो इंट्रासेलुलर कॉन्टेंट्स विल रिलीज, उससे और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगा. इन्फ्लेमेशन जब भी होता है तो कोएगुलेशन भी होता है, तो माइक्रोवैस्कुलर थ्रोम्बोसिस होंगे तो ब्लीडिंग भी होगी. ब्लीडिंग हो रही है, थ्रोम्बोसिस हो रही है, इस्कीमिक सेल डेथ हो रही है तो सेल के कॉन्टेंट्स फिर निकलेंगे, फिर इन्फ्लेमेशन होगा तो रिएक्टिव ऑक्सीजन डैमेज होगा, सेल डेथ होगी, कोएगुलोपैथी होगी, माइक्रोथ्रोम्बाई बनेंगे, ब्लीडिंग होगी, सेल डेथ होगी.
There will be neutropenia, thrombocytopenia, DIC. There are triggers of DIC: inflammation, sepsis, trauma, pregnancy, tumor, cancer, etc., which causes DIC. And treat the underlying condition, transfuse it. And other DDs are heparin-induced thrombocytopenia, TTP, hemophagocytic lymphohistiocytosis. Then there is a scoring system for diagnosis of overt DIC, containing 4 parameters: platelet count, fibrin related marker, PT, and fibrinogen. So platelet count should be high, fibrin related marker, fibrin degradation product, should be low, PT should be low, fibrinogen should be high. What does sepsis do to our skin? So we can see the skin, we can see the changes occurring on skin. The cutaneous manifestation of sepsis can include direct bacterial involvement of the skin and underlying soft tissue, causing cellulitis, edema, erysipelas. What is erysipelas? Erysipelas is an acute bacterial skin infection of the upper dermis and the superficial lymphatics, caused by Streptococcus pyogenes. अपर डर्मिस से लेकर सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स तक का इन्फेक्शन. Lessons from hematogenous seeding of the skin and underlying tissue can cause petechiae, pustules, cellulitis, ecthyma gangrenosa. Lesions from hypotension and DIC cause acrocyanosis, cyanosis and necrosis of the peripheral tissue, mottling. Lesions from intravascular microthrombi and immune vasculitis and lesions caused by toxin. Look for any necrotizing or surgical source of sepsis and recall that the toxic shock syndrome present in an overlapping fashion. Sepsis is a clinical diagnosis and ED has a very high frequency of sepsis. Given the high frequency of sepsis in ED patient with undifferentiated shock, think of it as cause when uncertain. Do not withhold resuscitation and antibiotics. Most common sepsis trigger is acute bacterial pneumonia. Acute pyelonephritis, cholecystitis and cholangitis also cause sepsis. In adults with sepsis, obtain at least 2 separate sets, यानी total 4 of blood cultures from different venipuncture site when possible. In adults with sepsis, obtain at least 2 separate sets of blood culture from different venipuncture sites when possible. The cornerstone of initial management of sepsis is early recognition, early reversal of hemodynamic compromise, and early infection control. So source control, hemodynamic stabilization, and antibiotics. Do not delay vasopressors when blood pressure does not respond to volume or if volume overload seems likely. No one approach. Early recognition of sepsis, administration of antibiotics, antimicrobials, adequate volume resuscitation, and assessment of the adequacy of circulation are the important elements that improve outcome, not any specific path of resuscitation. Treat the infection, give antibiotics. In post-splenectomy patient, they are at increased risk for PMCH, pneumomeningococcus and Haemophilus. They are also a risk of encapsulated species like Salmonella and Haemophilus.
which antibiotic should be used is determined by this table. So a non-neutropenic adult, normal adult without an obvious source of infection. A normal non-neutropenic adult without an obvious source of infection. Likely pathogen will be Staph aureus, your skin, Streptococcus, gram-negative bacilli and others. Antibiotics will be imipenem or meropenem or doripenem or ertapenem plus venco. So any carbapenem plus venco to cover your cocci. Then adult with suspected biliary source है, अगर biliary source है तो हमें एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई को कवर करना है. तो अगर ब्लू वाला बैक्टीरिया है, कोकाई है हमारे पास, तो हमें कार्बापेनम प्लस वेंको देना है. अगर हमारे पास ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, बिलियरी सोर्स, जैसे इंटेस्टाइन में मोस्टली हमें ग्राम नेगेटिव बेसिलाई मिलते हैं, तो बिलियरी सोर्स अगर हमारे पास है तो हमें क्या देना है, एम्पेसिलिन सल्बेक्टाम या पिप्टाज या टिकारसिलिन क्लेवोनेट प्लस मेट्रॉन. तो टिकारसिलिन क्लेवोनेट प्लस मेट्रॉन या पिप्टास मेट्रॉन या एम्पेसिलिन सल्बेक्टाम प्लस मेट्रॉन ऐसे देना है अगर हमें इंट्रा एब्डोमिनल या बिलियरी सोर्स लग रहा है तो. देन अडल्ट्स विद सस्पेक्टेड निमोनिया, तो निमोनिया न्यूमोकोकस, MRSA, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, लीजियोनेला, ये सब होंगे. तो हमें क्या देना है, पहले ही डिस्कस किया था उसमें, और क्या दे सकते हैं, जोन प्लस अजीथ्रो प्लस लीवोफ्लॉक्स प्लस वेंको, चारों दे दिए उन्होंने. तो जोन प्लस अजीथ्रो एटिपिकल कवर के लिए, लीवोफ्लॉक्स ज़रूरत नहीं है, अगर हमें अजीथ्रो देना है तो लीवोफ्लॉक्स की ज़रूरत नहीं है, प्लस वेंको. तो यू कैन ऑल्सो गिव जोन प्लस अजीथ्रो प्लस वेंको ओनली, है ना, वेंको अगर MRSA कवर करना है तो. बट वी कैन जस्ट गिव जोन अजीथ्रो, इसमें तो जोन प्लस अजीथ्रो प्लस लीवोफ्लॉक्स प्लस वेंको दिया हुआ है. अडल्ट्स विद सस्पेक्टेड IV ड्रग यूज़. नाउ IV वो लोग स्किन तो प्रेप करते नहीं है, तो स्किन का होता है स्टैफ ऑरियस. IV ड्रग यूज़र में क्या होता है, सेप्सिस का सोर्स स्टैफ ऑरियस, स्किन का. स्किन अगर सेप्सिस कर रहा है तो MRSA सोचेंगे तो वेंको देंगे इनको. देन अडल्ट्स विद पिटिकल रैश, पिटिकी किस में होते हैं, निजेरिया मेनिंजाइटिस में और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में. निजेरिया के लिए क्या हम देंगे, जोन फॉर गोनोरिया, रिमेंबर ऑलवेज. जोन या सेफोटैक्सिन दे सकते हैं. एंड RMS फीवर के लिए, सारे ट्रॉपिकल फीवर के लिए हम क्या देते हैं, डॉक्सी. RMS फीवर के लिए भी क्या देंगे, डॉक्सी. देन इंट्रा एब्डोमिनल सोर्स अगर है तो मिक्सचर ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, एरोब्स एनारोब्स ग्राम नेगेटिव, और पिंक कलर के इकोलाई वगैरह. क्या देंगे, इमीपेनेम और मेरोपेनेम और डोरीपेनेम और एटा और एम्पेसिलिन सल्बेक्टाम और पिप्टास प्लस मेट्रॉन. कोई भी कार्बापेनेम या हाई एंड पेनिसिलिन प्लस मेट्रॉन दे देंगे. तो कार्बापेनेम हो गए आपके इमी, मेरो, डोरी, अटा, इनमें से एक ले लेंगे, या एम्प सल्बेक्टाम ले लेंगे या पिप्टाज ले लेंगे प्लस मेट्रॉन. सो मेरो मेट्रॉन इज़ नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन जो हम लोग देते थे. देन अडल्ट्स, नॉन न्यूट्रोपेनिक अडल्ट्स विद सस्पेक्टेड यूरिनरी सोर्स. यूरिनरी सोर्स अगर है तो इक्वलाई ऑफ कोर्स हमें कवर करना है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, एंटेरोकोकाई कवर करना है. क्या देंगे, लीवोफ्लॉक्स या मोक्सीफ्लॉक्स या पिप्टाज या जोन या एम्पेसिलिन प्लस जेंटामाइसिन. है ना, लीवोफ्लॉक्स, मोक्सीफ्लॉक्स, पिप्टाज या जोन या एम्पेसिलिन प्लस जेंटामाइसिन. देन अगर अडल्ट्स में यूरिनरी सोर्स मिल रहा है कॉम्प्लिकेटेड UTI का, तो पिप्टाज या इमीपेनेम, मेरोपेनेम, डोरी
इनमें से यूज़ करेंगे या एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन यूज़ करेंगे। न्यूट्रोपेनिक अडल्ट अगर हैं, न्यूट्रोपीनिया है पेशेंट को, तो हमें सेफ्टाजिटीम या सेफेपाइम या इमिपेनम या मेरोपेनम या पिप्टास प्लस लिवोफ्लॉक्स प्लस एंको या फ्लूकोनाजोल भी देना रहता है। न्यूट्रोपीनिया में पिप्टास प्लस लिवोफ्लॉक्स प्लस वेंको, एमआरए से सूडोमोना, लिवोफ्लॉक्स सबका कवर दे देंगे हम। एंटीफंगल भी दे दो, फ्लूकोनाजोल भी दे दो। Patients with suspected anaerobic source like intra-abdominal, biliary, female genital tract, necrotizing cellulitis, skin infection, odontogenic denture infection या anaerobic soft tissue infection, है ना। एनेरोब्स कहाँ रहते हैं हमारे? इंट्रा-abdominal, बाइल में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, नेक्रोटाइजिंग सेलुलाइटिस में, दांत में, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में, सेलुलाइटिस में। तो एनेरोब्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? मेट्रोन और क्लिंडा। मेट्रोन जो है वो डायफ्राम के नीचे, क्लिंडा डायफ्राम के ऊपर। एनेरोब्स के लिए यही पढ़ते थे हम, मेट्रोन और क्लिंडा, और मेट्रोन एनेरोब्स के लिए। पेशेंट विद इंडवेलिंग वेस्कुलर डिवाइसेस से अगर इन्फेक्शन सोच रहे हैं तो क्या होगा? स्किन ऑफ कोर्स, योर स्टाफ एंड एमआरए से। तो इनके लिए क्या दोगे? वेंको दोगे। अगर लीजियोनेला इन्फेक्शन का रिस्क है, एल्डरली पेशेंट है, लीजियोनेला न्यूमेटोफिला, एसी डक्ट वाला निमोनिया है, सो एसी कॉज लीजियोनेर्स डिजीज या एसी लंग कॉज बाय लीजियोनेला बैक्टीरिया। सो लीजियोनेला में हम क्या यूज़ करेंगे? एजीथ्रो या एरिथ्रो, एटिपिकल वाला, एजीथ्रो, क्लैरिथ्रो, एरिथ्रो, ये सब। अगर एस्प्लेनिक पेशेंट है तो कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में देना है, पीएमसीएच, साल्मोनेला एक्सेट्रा। तो क्या देना है? जोन देना है। नेक्स्ट इज न्यूट्रोपेनिक फीवर। Due to an impaired immune system, neutropenic patients are at increased risk of developing sepsis and worst outcome. All patients, neutropenic patient is suspicious for infection, and all patients should have source organ and blood cultures drawn, followed by empirical antibiotics. And कोशिश करो कि बंदे को घर पे ही रखने की, घर पे पेशेंट को ओरल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एजेंट दो, क्योंकि हॉस्पिटल में आके तो उसे ए वोमेन ही होना है, फिर वो ठीक भी नहीं होगा। एक दिन हम सब मर जाएंगे, सिर्फ ए वोमेन ही रह जाएगा। ऑफर इंक्लूडिंग अ किनोलॉन, घर पे फ्लोरोकिनोलॉन दे दो इफ़ दे लुक वेल एंड आर क्लोजली फॉलोड। एंड अगर घर वाले उसका हरामजादा नहीं करने वाले हेल्प उसकी, तो एडमिट कर लो भाई, क्या ऑप्शन है अपने पास।